Assalamu alaikum viewers. My name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 कंप्यूटर स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6 ड्राइंग विद शेप्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं उस एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टूल विच अलाउज अस टू ड्रॉ विद डिफरेंट शेप्स इज ड्राइंग टूल, शेप टूल, लाइन टूल और पेंसिल टूल। ऑप्शन बी, शेप टूल। शेप्स ग्रुप इज फाउंड अंडर टैब ए, होम, बी, शेप्स, सी, ड्राइंग, डी, व्यू। ऑप्शन ए, होम। टू सेलेक्ट आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप, क्लिक ऑन ग्रुप, कलर 1, कलर 2, फिल विद कलर और आउटलाइन। Outline. Option D. To fill colors in our drawings, we use the tool. Option A, fill with color. Option B, fill tool. Option C, color tool. या option D, paint tool. Option A is the right answer, fill with color. Our next question is, write the correct name of the tool or options given here. The first picture is the picture of size tool. The second picture is outline style. Picture number 3 is shapes and the last picture is colors. Question number 3, fill in the blanks with the help of given words. The words are fill, fill with color, color 2, shift and color 1. Blank 1, we should click on the dash button for the foreground colors. Color 1. Blank 2, dash drop down, list various fill styles. Fill drop down. Blank 3, to draw a shape with equal sides, press and hold dash key and drag the mouse. Press and hold shift key. Question 4. Dash tool is used to fill colors in a closed area. Filled with color tool. Blank 5, we should click on the dash button for the background colors. Color 2 button. Our next question is, answer the following questions. Question 1, what is the use of shapes tool? Shapes tool is used to draw shapes like lines, squares and ovals, etc. Question 2, what is the use of fill with color tool? Fill with color tool is used to fill colors in a closed area. Question 3, name any 3 types of shapes which you can draw in MS Paint. We can draw stars, triangles and circles. Question 4, how will you fill color in any shape? To fill the color in any shape, step 1, go to the home tab and in the tools group, click on the fill with color tool. Step 2, click on color 1 and select on the desired color. Step 3, click inside the shape. टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि टीचर्स बच्चों को ले जाकर मुख्तलिफ तरह की शेप्स को ड्रॉ करवाएं, उनमें कलर्स फिल करवाएं, उनकी आउटलाइंस चेंज करवाएं और उनमें मुख्तलिफ स्टाइल्स के फिल भी करवाएं। इससे बच्चों को मज़ीद सीखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही आपको चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करना समझ आ गया होगा और आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।